All right, Assalamu alaikum. I'm just Simon, right? So I'm gonna get back to him after the class. Uh, all right, so we're gonna focus upon how do you solve or how do you treat people with impulse control disorder. So it's pretty straightforward, ठीक है ना? Like depression, schizophrenia, तुम्हारे इसके अंदर भी है. OCD. This also has a biochemical treatment to it, as in drugs. So Grant का जो क्या कहते हैं treatment है, it's like it's been like repeated many times in the paper, right? So it's like, oh, but I guess it won't be repeated. So one good method to like kind of predict what's gonna come in past papers is to find out कि किस चीज़ का सवाल नहीं आया हुआ, क्योंकि like your course has सिर्फ उसको 2 साल हुए हैं, so chances are कि जो चीज़ बार बार आ चुके हैं they're not gonna come again anytime soon, at least for 2 years, you know. So, anyways, Grant medications. So, the क्या कहते हैं, just like schizophrenics use antipsychotics, right? Um, Depressed patients use antidepressants. So, people with impulse control disorder use this type of drug, opiate antagonist. ठीक है ना? Uh, नाम कभी सुना नहीं होगा, and that's completely fine. But this is a group of drugs known as opiate antagonists, right? And it blocks by blocking certain receptors in the brain, right? So there is an experiment done on opiate antagonists, right? So Grant does an experiment to find out whether nalmefene or naltrexone is better. So there are two opiate antagonists that Grant wants to find out कि कौन सा बेहतर है, nalmefene or naltrexone, right? So to find that out, he does this experiment on two people. Mind you, this is an independent major design. ठीक है. So obviously, individual differences might be a factor in both the groups. जिसकी वजह से internal heredity गिर जाएगी. But the samples almost equal amount of male and female, and this is going to be conducted on legitimate people who have gambling disorder. So ये 100% valid case है, diagnosed हुए लोग हैं. So the way he does it is he divides people in three groups. Nalmefene group, you know it. Naltrexone, you know it. The third group is the placebo group, right? Fake medications, because you have to have a placebo control group when you want to check out drugs. It is a requirement. You can, if you want to create medical drugs, if you want to create psychological drugs, psychiatric drugs, sorry, हमेशा control group होगा, वरना वो pass नहीं करते. So this has a placebo control group and it's a double blind experiment. So basically neither the experimenter, मतलब the grant knows कि कौन सा participant कौन से group में, but जो जो रिसर्चर्स होते हैं, राइट, जो सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उनको नहीं पता कि पार्टिसिपेंट कौन से ग्रुप का है, और पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता कि हम में कौन सी दवाई मिल रही है. All they know is that they're supposed to take a substance, right? And that's it. So neither the experimenter or the participant knows which conditions there are in to क्या कहते हैं prevent demand characteristics. So anyways, people are given naltrexone, nalmefene, or placebo, and we want to know which works. So all of these drugs except naltrexone, right? Naltrexone is given for 16 weeks, but placebo and nalmefene is given for 18 weeks, right? उसका reason जानना इतना main important नहीं है, right? But even if you write that the experiment went on for 18 weeks, if you write this sentence, you're still correct, क्योंकि भले ये 16 week में खत्म हो जाए, लेकिन बाकी दो तो चल लेंगे ना, so the experiment will end at the 18 week. So we want to know whether medications work or not, right? Basically हमें effectiveness of medication मालूम करें, and this is a good blueprint. This research is a good blueprint, guide. If for example paper 4 के अंदर कोई ऐसा question आता है, design an experiment to find out whether this therapy works or not, or whether this treatment works or not. So this is what you're supposed to. पहले तुम्हें लोगों की पहले दवाई लेने से पहले तो उनको कोई ना कोई रीडिंग लेना होगा, right? So दवाई देने से पहले उनका symptoms मालूम किया. So they use Y-box. Y-box is a scale for OCD, but they modified it to measure gambling disorder. ठीक है ना? So they did this for every single group to make sure that we know where the people are before we give them drugs.
So after you know what the severity of the symptom is, you give everyone drugs. ठीक है. दवाई देने के बाद, obviously, you're gonna check their symptoms again and compare it to the Y box that was given before. Simple standard procedure. But Grant had one final thing that he said कि भाई मानता हूँ कि वाई बॉक्स के अंदर जो स्कोर होंगे ना वो कम हो जाएंगे. ही knows it, लेकिन he says कि एक certain amount कम होना चाहिए, वरना मैं नहीं मानूंगा कि बंदा बेहतर हो कि नहीं हुआ. तो ही सेज दैट आई एम गोना क्लासिफाई अ पर्सन गेटिंग बेटर इफ उनका जो स्कोर होता है ना सेकंड टाइम जब मेजर करते हैं पहले से 35% कम आया होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज तुम्हारे वाई बॉस के अंदर पिछली दफा 100 आया था यहाँ पे. अब तुम्हें बेहतर होने के लिए यहाँ पे 65 लाना पड़ेगा. या अगर 65 नहीं आता, तुम्हारा 66 आता है, राइट. अगर 67 आता है स्कोर, इसका मतलब है कि यू आर नॉट बेटर. टू बी एबल टू बी क्लासिफाइड दैट यू गॉट बेटर, तुम्हारा स्कोर नया वाला जो है ना ओरिजिनल स्कोर से 35% कम होना चाहिए. So that's the criteria he set for all three groups, right? So whether did everyone in the experiment met the criteria that Grant set, अभी तक हमें नहीं पता. And Grant said कि 18 हफ्ते बाद अगर हम लोग का रेटिंग लेंगे ना तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा. बट दैट्स फाइन. ही सेज के after the experiment end, एक महीने बाद दोबारा बुला के ना उनका दोबारा रीडिंग लेना to make sure the effects are long lasting or not. So Grant went, in depth and long term in this. So results, the placebo didn't work. Placebo के अंदर लोग people failed to meet this criteria. As in placebo group के अंदर जो लोग के symptoms थे वो इतने ज़्यादा नहीं गिरे. But nalmefene and naltrexone both worked. Nalmefene was successful in reducing people's symptom by 35%. Same with naltrexone, and they all worked after the follow-up as well. So nalmefene and naltrexone are both effective in reducing symptoms, particularly of gambling disorder. So that's one result. Another result is these. Grant says that the higher the dose you give of a medication, as in nalmefene 2 mg है ना, उसको 4 mg कर दो, ज़्यादा बेहतर बंदा हो जाएगा. सेम विद naltrexone, अगर naltrexone 5 mg की दे रहे हो ना, 10 mg की दे दो, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. So if you give more dosage, it's gonna reduce your symptoms more. Common sense. But he says one more thing. Oddly enough, people जिनके alcoholics, sorry, people जिनके घर में कोई ना कोई alcoholic patient था, right? People who have a has history or a family history of alcoholic people, they responded to medications more better. क्या मतलब? Basically, Grant's what he's trying to say is like people in the experiment, right? Some of these people in this experiment, particularly people who belong to nalmefene या naltrexone वाले ग्रुप के लोग, उनके घर में कोई ऐसे लोग होंगे जो अम्मी अब्बू या भाई बहन वगैरह जो अल्कोहल से अडिक्टेड होंगे, राइट. सो इफ दे हैव समवन हु इज अडिक्टेड टू अल्कोहल इन देयर हाउस, वो दवाई से, जो पेशेंट है गैम्बलिंग डिसऑर्डर को, वो दवाई से ज़्यादा बेहतर होंगे. द रीज़न बीइंग इज दैट दे ऑलरेडी हैव सीन व्हाट addiction does to other people, taking example of people who are addicted to alcohol in their house. So that is why when they want to treat their own addiction through nalmefene and naltrexone, they're going to be super serious about it. So that's why they're going to improve more better with medications. अब ऐसा भी नहीं कि people who don't have people who are addicted with alcohol in their house don't get better. They do get better, but chances are that if you have someone who's addicted with alcohol in your house, you get super better if you use nalmefene and naltrexone. So that is it. So if you were to evaluate his experiment in terms of ye wale criteria, so if you say equal genders, it is generalizable. Large amount of people, it is generalizable. But is it generalizable to other disorders? Nahi, because this was only done on gambling disorder people, so we're not sure about it. So it may be limited to only gambling disorder people. Is it replicable? Can we repeat this study if we wanted to? Yes. The dosages of the drugs, the amount of drugs given, the schedule of the drugs, even the questionnaires were standardized, so it allows for application. Is it applicable? Yes, because now we know which drugs we need to use to improve people. It is applicable. Is it valid? Well, demand characteristics come आए थे क्योंकि double blind study थी. Neither the participant nor the experimenter knew which group were they in. Also, control group, the presence of a control group, right?
ये जो placebo group था, this also increases validity of an experiment, right? ये तुम लोग AS से concept लेके आना चाहिए था. We don't know how does placebo group increase the internal validity of a study. मुझसे पूछ लेना. Um, all right. Yeah, Y-box. Y-box is a self-report questionnaire where the person will give their own answer of the symptoms. So the patient can lie on the Y-box. This Y-box then can reduce the internal validity bar. But because you use legitimate diagnosed patient and because the study was conducted longitudinally, this also increases internal validity bar. Yeah, there's some super ethical masala. Because see, all of them were legitimate patients, right? Hard किसी को gambling disorder diagnosed, confirmed था. So people who went into the nalmefene group, they got better. Naltrexone, they got better. People who went into placebo group, right, they didn't get better. तो उनका आपने 18 हफ्ते ऐसे ही ज़ाया कर दिए, क्योंकि इनका क्या कसूर था कि आपने इनको बेहतर नहीं किया. ये बेहतर हो गया, ये बेहतर होगा, ये तो बेहतर नहीं हुआ ना. तो आपने इनका 18 हफ्ते ज़ाया कर दिए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू डिसीव देम एज पर टाइम भी ज़ाया किया आपने, मुझसे झूठ भी बोला. एथिकल मसला है. The data that you get is quantitative data because Y box जो है questionnaire gives you quantitative data. So at the end of the day, you can argue, okay, you know what, this study shows which drugs work, but it doesn't give you the type of information you need to know why does those drugs work. You don't know the why they work. You just know that they work, but that's it. तो ये था experimental design के हवाले से evaluation. Now, if you come on to the other evaluation points, जो debate वाला होता है, individual situational. This is completely situational because this is a situation, this is a situation, this is a situation. So if you change the person's group, as in placebo control group didn't get better, nalmefene and naltrexone got better because their situation was different. So whatever group you are assigned to, उस लिहाज से तुम बेहतर होते हो. So it's completely a situational factor, but having a history of alcoholic in the house is an individual factors both. Uh, what drugs you take, placebo or nalmefene naltrexone, that's situational. Having alcoholic people in the house, that's individual. So it's both in that regard. Is it reductionist? Yes, because only focusing on the biochemical aspect, cognitive side pe dal diya, you know what, like behavioral side pe, emotion side pe. So only focusing on the biochemical aspect. So it is reductionist. Is it deterministic? Yes, because like I said, you take medications to get better. So once you take the medication, तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, सारा का सारा काम दवाई करता है. तो it's not in your hand how the medication works, right? You're not in control of it, you don't influence it, you're not active. So it's completely deterministic. uh, is it cost effective compared to certain therapies? Yes, because you're going to find out that therapies, some of the therapies are long term, some of the therapies are short term. So nalmefene naltrexone, right, compared to longer therapies, they're cost effective, but uh, they're not super cost effective क्योंकि इनको 18 हफ्ते लगते हैं बेहतर होने के लिए. तो 18 हफ्ते का कोर्स लेना भी महंगा पड़ जाता है. सो इफ एनी थेरेपी exceeds longer than 18 weeks, so then these drugs will be cheaper. If any therapy is shorter than 18 weeks or 16 weeks, then these drugs are expensive. All right. uh, appropriateness के हवाले से, right, कि are these drugs appropriate for use? Well, these drugs, opioid antagonists, will have side effects. So side effects factor hota hai. And number two, these drugs don't make the person independent, as in you have to use these drugs. जब तक problem है, they don't. You will not stop having a problem once you leave the drugs. So dependency create कर देता है. That's one point as well. So appropriateness के हवाले से not so much. Yeah, so that's the entire evaluation, I guess. If you want summary, you're supposed to quote his experiment. That's the entire summary. ये जो GABA वाला scene, right? You don't need to mention it. ठीक है. ये जो पूरा जो paragraph, right? It tells you how opioid antagonists work. Basically, I told you they block the receptors, right? तो किस चीज का receptor block करते हैं? Dopamine का करते हैं. What you call it? Serotonin करते हैं. Common sense, अगर तुम्हें याद होगा कि पिछली दफा dopamine is responsible for impulse control disorders, तो opioid receptor, opioid antagonist is going to block the dopamine receptor, right? So dopamine को तो block करेगा,
but with that is also going to क्या कहते हैं block GABA as well. ठीक है ना? So if you don't want to read the biological point pura, just remember the mechanism. They block dopamine receptors so that dopamine levels get reduced. That's it. ठीक है. But apart from that, मैं पूरी study का तुम summary दे सकते हो so that you can gain marks in exam. So that's the entire study by grant, right? अगर 2 मार्क का सवाल आता है and they ask you what is opioid antagonist, so you're supposed to just tell the function of opioid antagonist, right? Uh, and your answer will start from here. Opioid antagonists are thought to decrease dopamine neurotransmission, ठीक है ना, in the nucleus accumbens. Full stop. I guess उसके ज़्यादा तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है. But all in all, what you're supposed to remember is the experiment mainly, not the mechanism. Mechanism सिर्फ एक ही line का है. Blocks dopamine receptors and reduces dopamine activity in the nucleus accumbens. That's it. Um, कोई सवाल पूछना है regarding Grant experiment? All right, and you guys do know how placebo groups increases the internal validity of an experiment, right? पता है ना? What's psychosocial functioning? Okay. Psychosocial functioning basically, आसान लफ्ज़ों में बोलूं, is daily life functioning. Being able to do your job properly, being able to go to your education institute properly, being able to, do social interactions around people normally, being able to maintain relationships. So basically daily life functioning. उसको कहते हैं psychosocial functioning. उसके अलावा और कोई सवाल? I guess not. तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? But if you are in the middle of typing a सवाल, you can press enter. I don't mind. But so जब तक सवाल नहीं आता, I'm gonna move on. So that's the biochemical treatment. Yeah, impulse control disorder has 4 treatments. So yeah, this is gonna be a long chapter. It's not the regular 3 treatments, 3 causes. इसका थोड़ा सा treatment ज़्यादा है. First of all, is the biochemical treatment. ठीक है ना, that's done. Now we come on to therapies. अब therapies आना शुरू हो जाएंगी. Uh, yeah, there's this word known as covert sensitization, right? Yeah, this you're gonna confuse it with इसके बाद जो therapy आती है, known as imaginal desensitization, right? And imaginal desensitization, I think you're gonna confuse it with phobia therapy, known as systematic desensitization, right? So basically, before telling you what this therapy is, I want to clarify certain points so that you can identify what the difference is between uh, sensitization पहले and desensitization, right? All right. Sensitization, right? Conceptually समझा तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, but if you know the concept, then you will never confuse 2 therapies या 3 therapies together just because they sound the same. Sensitization का मतलब है basically you're gonna क्या कहते हैं, add something new into people's life, or you're gonna teach them something new that they never had something before, right? So you're gonna teach them something new, as in you're gonna add something into their life. Desensitization is called you're gonna remove something that they have, or you're gonna make them some unlearn something, right? तो कहते हैं ना कि लोग पाकिस्तानी कौम जो है, at a point
टीवी में इतने सुसाइड बम ब्लास्ट की तस्वीर आती थी कि पीपल स्टार्ट्स टू से कि यार हम जो है डिसेंसिटाइज हो गया, मतलब हमारे अंदर ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हमारे अंदर एम्पैथी चल गई, निकल गई, जो थी वो चली गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है या तो खत्म कर देना या निकाल देना या यू नो व्हाट भुला देना। दैट्स व्हाट डिसेंसिटाइजेशन मींस। एंड सेंसिटाइजेशन इज द गोना बी द ऑपोजिट, कोई चीज डाल देना, कोई चीज नया सिखा देना जो तुम्हारे पास पहले नहीं था। सो दैट क्लैरिफाइज दैट। अब जो ये वाला जो सीन है ना, ये वाला कोवर्ड, कोवर्ड सेंसिटाइजेशन basically covert as in something, covert का मतलब something that's hidden or something that's unseen, and basically thoughts and behavior की बात करें तो basically behavior can be seen, so thoughts is something that cannot be seen, and thoughts के अंदर आपकी imagination भी आती है, right? So basically whatever you do it in your imagination, whatever you think is going to be unseen. तो covert has to do with imagination, right? तो covert sensation मतलब है कि हम imagination के through हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, सही है? That's what the word covert means. तो please kind of just remember that कि desensitizing का मतलब कोई चीज निकाल देना, sensitizing मतलब कोई चीज अंदर सिखा देना. So yeah, so we're gonna do this study by Glover, covert sensation. समझ जाओ कि क्या मतलब है. This is gonna be case study, right? तो already generalizability का मसला हो सकता है. बहरहाल is gonna be done on a kleptomaniac patient जो औरत है. She has been stealing items from the shop for 14 years. So basically बहुत पुरानी पेशेंट है, कट्टर केस है, खतरनाक केस है. ग्लवर के पास आती है वो बंदी एंड शी सेज कि यार 14 साल से चोरी कर रही हूँ एंड जो मैं चीज़ें चोरी करती हूँ ना वो मैं इस्तेमाल भी नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल मैं बेबीज के शूज चुराती हूँ एंड यू नो व्हाट, मेरे घर में बेबी है भी नहीं. तो या so classic case of kleptomania क्योंकि she's stealing things that she does not use. Neither is she going to sell the baby shoes, neither the baby shoes has any emotional value, so she just steals things for the sake of stealing. um, ये औरत कहती है कि ग्लवर के पास आती है एंड कहती है यार मैं खुद ना अपने आप को सही करने की कोशिश भी कर चुकी हूँ. ये ऑब्वियसली 14 साल के अंदर बंदा कोशिश करेगा ना. कहती कि भाई मैंने बार बार अपने आप को इमेजिनेशन के अंदर ये इमेजिन किया कि मैं पकड़ी गई हूँ, लेकिन ये इमेजिनेशन करके अपने आप को डराने वाला जो टेक्निक है फिर भी काम नहीं किया. तो जब भी मैं आपके पास आई हूँ सो आप मेरे साथ कुछ करो, कुछ और करो. सो आप क्या करेंगे, ग्लवर क्या करेगा? जो कुछ और करेंगे ना ऑब्वियसली ग्लवर ने इसको ऑप्शन दिए होंगे कि मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ, मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ, मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ. तो बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर द ऑर्डर अग्रीड के ओके यू नो व्हाट, गो फॉर सेंसेशन, I agree to it. So basically, what I'm trying to tell is consent लिया गया था. This is active consent involved. So ethically point से thumbs up. So they both agree to covert sensation. Consent लिया था and informed consent लिया था क्योंकि covert sensation के अंदर basically you also talk about कि करना क्या है. मेथड तो तुमने टेक्निक तो अग्री कर लिया, लेकिन टेक्निक के अंदर बेसिकली क्या क्या एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर भी एग्रीमेंट होती है. सो ग्लवर सेज कि यू नो व्हाट, हम आपकी जो स्टीलिंग है ना नौजिया के साथ एसोसिएट करेंगे एंड दी शी अग्रीड कि ठीक है यार चलो मैं नौजिया के साथ आप एसोसिएट कर देना. तो ये भी कॉन्सेंट दिया गया था. इफ शी सेड नो तो हम किसी और चीज के साथ एसोसिएट करते हैं. सो बेसिकली up till now this is being done in her imagination, right? She's thinking about it and basically अभी तक उसका स्टीलिंग बिहेवियर के साथ अभी तक कुछ जुड़ा हुआ नहीं है. हम पहली दफा उसकी जिंदगी के अंदर स्टीलिंग के साथ नौजिया या वॉमिटिंग के साथ जोड़ रहे हैं, डाल रहे हैं. दैट्स वेयर द सेंसेशन पार्ट कम्स इन. नौजिया एंड वॉमिटिंग वाला जो एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो भी है. सो द वे दिस वर्क्स इज from session 1 to 3, what she is supposed to do is she's supposed to imagine herself in the supermarket. ठीक है ना? She is supposed to imagine herself in the supermarket, and she's also supposed to imagine herself approaching something that she is about to steal. ठीक है? While she's doing that, obviously, you know, कि अगर तुमने diagnostic criteria पढ़ा होगा क्लेप्टोमेनिया का, before stealing, you feel tension, right? Anxiety, tension होती है. So to counter that, इसको ये भी सिखा रहे थे कि while you're imagining this,
आप सारे रिलैक्सेशन टेक्निक भी इस्तेमाल करेंगे. कौन सी टेक्निक्स? डीप ब्रीदिंग करवा रहे थे. सो शी स्टेज calm. So she's imagining herself in the supermarket, right? And she's imagining herself approaching the object that she is going to steal, and she's also doing deep breathing. So yeah, विद इन द सेम सेशन आगे बढ़ाते हैं इसको कि भाई अब आपने क्या करना है. जब आप ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गए ना, आप ये भी इमेजिन करना, द क्लोजर यू गेट टू द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टील, उतना ही आपका नॉजिया बढ़ता रहेगा. तो यू हैव टू इमेजिन योर नॉजिया इंक्रीजिंग एज वेल एज यू गेट क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट. सही है. एंड उसके बाद क्या होता है, उसको बोलते हैं. एंड फिर आपको इमेजिन करना है जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट उठाया ना, इमेजिन योरसेल्फ वॉमिटिंग. Once you pick up the object, जैसे ही ऑब्जेक्ट हाथ में लग गया, you're supposed to imagine yourself vomiting in front of everyone to see. So yeah, while she's doing this, obviously imagining yourself vomiting, imagining nausea intensifying, आपको anxiety create कर देगा. That's why she's supposed to practice deep breathing with the imagination as well. So ये जो सीन है ना, शॉप पे जाओ, ऑब्जेक्ट के करीब जाओ, नॉजिया इंटेंसिफाई होगा, और जैसी ऑब्जेक्ट उठाए उल्टी होगी. ये शुरू के 3 सेशन ऐसे ही होते रहते हैं. यही शुरू के जो 3 सेशंस है ना, शी जस्ट इमेजिन्स द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, राइट. इससे आगे कहानी नहीं बढ़ती 3 सेशन तक. सही है. एंड सेशन नंबर 1 से 1 2 3 तक ये होता रहता. तो सो यू गाइस शुड नो दैट एक सेशन दूसरे सेशन के बीच में दरमियान का गैप होता है. एटलीस्ट एक हफ्ते का तो गैप होता ही होता है. सो एक सेशन गैप, दूसरा सेशन गैप, तीसरा सेशन गैप. गैप्स के अंदर ना औरत को होमवर्क देते हैं. होमवर्क क्या होता है कि भाई आपने घर जाके यही सीन अपने दिमाग में दोबारा दोबारा रिपीट करना है. कहाँ तक रिपीट करना है? उल्टी तक. शी इज सपोज टू do the imagination again and again and again till the point where she vomits. सही है, in the imagination. Also, इसको दूसरा होमवर्क भी पकड़ाते हैं कि भाई आपको, आप जो लिस्ट बनाती है ना, आप ये लिस्ट बनाती है द थिंग्स दैट यू बाय when you go shopping, but कोशिश करो कि you also make the list of things that you will not steal. So things that I should not steal का भी list बनाओ. That's also her homework. So she's given 2 homeworks अभी तक. Recreate the imagination over and over again in her head and make a list of things that she would not steal as well. And thirdly, उसको बोलते हैं जब आप शॉपिंग करने जाओ ना, तो आपका एक खास बैग होता है जिसके अंदर आप सामान डालती हो चोरी करने के लिए. औरत ने बताया होता है कि मैं सारा सामान इस बैग के अंदर डालती हूँ. तो थेरेपिस्ट कहता है कि लवर कहता है कि यू नो व्हाट, व्हेन यू गो शॉपिंग डोंट टेक द बैग, डोंट टेक योर स्टीलिंग बैग. सही है. तो ये इसका 3 होमवर्क है. Don't take your stealing bag, make a list of things that you will not steal, and recreate the imagination in your head again and again and again. See, 3 सेशन तक ये चलता रहता है. So in the fourth session क्या होता है, वहाँ यहाँ से शुरू करते हैं, right? वही सीन है कि she's in the supermarket approaching the object that she wants to steal. As she comes close to the object, the nausea intensifies, and as she picks up the object, she vomits. यहाँ तक तीसरा सेशन तो चलता ही चलता है. चौथा सेशन के अंदर यहाँ तक पहुंचते हैं, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं. वंस यू पुट द ऑब्जेक्ट बैक, आपकी उल्टी खत्म हो जाती है. सो दिस इज द कंटिन्यूएशन. नाउ वंस यू पुट द ऑब्जेक्ट बैक, आपकी उल्टी खत्म हो जाती है. यू नो लॉन्गर फील नॉजिया. एंड आफ्टर पुट द ऑब्जेक्ट, आप चुपचाप घर चले जाते हो. तो यू लीव द सुपरमार्केट एंड ऑब्वियसली रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल होगी. सो दिस इज द फोर्थ सेशन के अंदर ये नया continuation of the story डाल देते हैं. So does this work in making the person imagine okay, you know what, she's having vomiting when she steals and the vomiting stops when she doesn't steal? Well, does this work? Well, according to Glover's experiment, जो case study, this did work, and 4 सेशन के अंदर जो बंदी थी ठीक हो गई. So within 4 sessions काम चल गया, ये बंदी ठीक हो गई. And Glover had to make sure that the effects were long lasting, so he called her every now and then for 3 months, and पता चला कि she did not steal a single thing. So Glover ने क्या किया, फिर उसको 1.5 साल बाद बुलाया 19 months के अंदर. And 19 months के बाद जब बाद में आई, 1.5 साल बाद आई, तो she only stole one thing. बस एक ही दफा उसने चोरी किया, बाकी दफा उसने चोरी नहीं किया. तो दिस इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट कंसिडरिंग कि 14 साल से चोरी करी थी. So this proves that you know what, covert sensation works to treat kleptomania. Case study. So yeah,
and the effects were long lasting as well. So evaluating, is it generalizable? Nahi, 100%. Is it reliable, replicable? Well, the procedure, yes, but the content of the procedure may not be replicable because some people may agree to nausea, some people may want something else to be associated. So the content of the imagination might differ from people to people, even though the principle might be same. The homework might differ from people to people, क्योंकि इसका मसला चोरी का था ना, तो जिसका चोरी का मसला नहीं उसको आप कुछ और होमवर्क दोगे. और भले तुम्हारे पास चोरी वाला क्रिप्टोमेनिया वाला पेशेंट है, बट यू नो व्हाट दे से कि यू नो व्हाट नॉलेज एसोसिएट नहीं करवाओ. आप जो है यू कैन एसोसिएट बीइंग यू नो व्हाट क्या कहते हैं फेंटिंग एसोसिएट करवा दो. So different people might want have to have different things associated. So it's not going to be the same for everybody. So replicable गिर जाती है. What if the person momentarily rationally picking up the object? What if the person momentarily rationalizes picking up the object by thinking that they'll pay for it and I'm not doing so? Would the nausea condition still apply? Acha, so you're saying that if the person picks up the object, if the kleptomaniac woman picks up the object while she's shopping in the store, and basically when she picks up the object, she decides that she is going to pay for it when when she's holding the object. So basically, you're asking, जब उसकी नीयत ही यही है कि मैं इसके पहले ही पैसे दूंगी, तो क्या उसको वॉमिटिंग आई कि नहीं आएगी? वेल, द थिंग इज तुम्हारा जो क्वेश्चन जो है ना वो आने का मौका भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लवर मेक श्योर करता है कि ये औरत, अच्छा बेसिकली सारा का सारा इमेजिन कर रही है, राइट? असल में सुपरमार्केट में नहीं है. सो थिंक ऑफ दिस वे, the woman in her imagination will not pick up the object that she intends to pay for it momentarily, right? She will always purposefully imagine the object she intends to steal 100%, right? वरना वरना फिर वो तो गलवर का टाइम भी जाया करेगी, अपना टाइम भी जाया करेगी. तो हमेशा उसकी इमेजिनेशन के अंदर वही ऑब्जेक्ट आएगा दैट शी इंटेंड्स टू स्टील. ठीक है. अच्छा, एंड ना यूर अच्छा, अब सवाल होता है कि ये तो सारा इमेजिनेशन का गेम था, लेकिन असल सुपरमार्केट के अंदर यही सीन होता कि नहीं होता? वेल, असल सुपरमार्केट के अंदर, क्योंकि वो तो रियल एनवायरनमेंट इज नॉट इमेजिनेशन, विल दैट थिंग अप्लाई ओवर देयर और नॉट? We don't know specific things, but we did know कि she stopped stealing थोड़ा बहुत, क्योंकि 19 months के अंदर सिर्फ एक दफा चोरी की. तो basically the idea is that she will not touch things that she does not intend to buy, क्योंकि इससे जो लिस्ट बनाता है, that's what Glover is trying to do. किस तरह समझाऊं मैं तुम्हें? Alright, the thing is, kleptomania वाले लोग होंगे ना, let's suppose they're going shopping, they want to buy vegetables क्योंकि खाना पकाना उनके घर में नहीं है, groceries चाहिए. So इम्तियाज गए हैं, they're buying groceries, right? Things to buy. Now this is something that they need, right? That they need. अगर they go to the toy section, समझ जाओ कि they're deviating from this column and यहाँ पे आना शुरू कर. So अब चोरी करने वाले सीन पे आ गए, क्योंकि उनको खिलौना तो नहीं चाहिए. She's a woman, she doesn't want खिलौने. So why are you going to toy section? Or to steal? So even if she picks up the toy intending that I'll pay for it, ठीक है, that would also come under क्या कहते हैं, attempting to steal. क्योंकि why are you buying something that you don't need? क्योंकि obviously इसका मतलब है कि you're trying to, like, you know what, lie to yourself कि you're gonna pay for it, but in the end you don't need that thing, and eventually you're gonna end up stealing for it क्योंकि you don't intend to buy it, क्योंकि you don't need it. So that's why I guess Glover ने क्या किया होगा कि उस औरत को बोला होगा, you know what, you don't just don't go to the things that you don't even need. Just stick to the thing that you wanna buy. अच्छा, अब सवाल ये होता है, what if she intends to steal the things that she needs? What if she intends to steal the thing that she wants to use? Sabzi.
फिर वो क्लेप्टोमेनिया के अंदर नहीं आएगा, फिर वो चोरी के अंदर आ जाएगा। क्लेप्टोमेनिया वाले लोग वो चीज चोरी करते हैं जो उनके काम का नहीं होता। इफ शी स्टील समथिंग दैट उसके काम का है, फिर वो चोरी के अंदर आ जाएगा। एंड दिस औरत विल नेवर डू दैट, क्योंकि ये चोर नहीं है, क्लेप्टोमेनिक है। सो yeah, so picking up the object that she intends to pay for it, if it's for her use, she will definitely pay for it. If it's for her use and she decides she will not pay for it, फिर वो चोरी करने लगेगा, and this author is not capable of doing it क्योंकि वो patient है. But if she intends to pick up the object that's not of her use and she intends that she'll pay for it, chances are कि उसको मना किया होगा कि you know what, don't even go through that section that you don't need things for. So does that answer your question? All right. Yeah. हम कहाँ पे थे? Is it applicable? Yes, क्योंकि now we know that this is applicable for treating people with impulse control disorder. But is it possible for pyromania? हमें नहीं पता. It is valid क्योंकि it was longitudinal, right? But it's not valid that, you know what, Glover never made sure कि ये औरत असल अपना होमवर्क करती थी कि नहीं करती थी, क्योंकि सेशन के अंदर तो हमारे सामने है, बट इन द मिडल ऑफ द सेशन जहाँ पे उसको होमवर्क करना होता है, वी डोंट नो वेदर शी डिड और नॉट. सो बेसिकली दे कैन लाई अबाउट डूइंग देयर होमवर्क, जिसकी वजह से इंटरनल वैलिडिटी गिर सकती है. इन्फॉर्म कंसर्न का कॉन्सेप्ट था, एज आई सेड, के उसको बताया गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इवैल्यूएशन पॉइंट्स को पढ़ाएं, नेचर नर्चर, डेफिनेटली नर्चर, क्योंकि हमने इसको सिखाया, एसोसिएशन क्रिएट किए बिटवीन nausea and streaming, so it's nurture. Individual situational, well, this is going to be क्या कहते हैं, both. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थेरेपी का जो कंटेंट डिफर करेगा. फॉर एग्जांपल, हर बंदा चाहेगा कि यहाँ पे कुछ और एसोसिएटेड हो, सो द कंटेंट ऑफ थेरेपी वुड डिफर इंडिविजुअल इंडिविजुअल. सही ना? ये सिचुएशनल भी है किस तरह, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन क्या कहते हैं, what are you associating with. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नेगेटिव चीज एसोसिएट की थी, नॉजिया, जिसकी वजह से उसकी स्टीनिंग बिहेवियर कम हो गई. अगर थेरेपी के अंदर आप नॉजिया के बजाय ना एक्साइटमेंट लगा दो यहाँ पे, obviously इसका क्लेप्टोमेनिया ट्रीट नहीं होगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर एसोसिएटिंग विद, पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स, उसके बेस पे बंदा ट्रीट हो गया, ट्रीट नहीं होगा. सो इट्स सिचुएशनल एज वेल. ये हो गया इंडिविजुअल सिचुएशनल. डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस फ्री विल इज फ्री विल. द पर्सन विल नॉट बी एबल टू इमेजिन जब तक उनका दिल नहीं चाहेगा इमेजिन, राइट? आप फोर्सफुल इनसे इमेजिन तो नहीं करवा सकते. सो इट इज फ्री विल, इट इज गोना बी इन द पर्सनस कंट्रोल. In reductionist or holistic, it is reductionist क्योंकि entire therapy relies upon the course installation. आगे पीछे कुछ भी नहीं है. All they're doing is just creating association within the person imagination. आगे पीछे कुछ भी नहीं है. So it is reductionist in that regard. Yeah. Do you guys have any questions regarding this further? All right, so I'm gonna restart the meeting. Your time खत्म होंगे, then I'm gonna share the link and then we'll continue.